Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we have started unit number 13, water, and today I will deliver its second lecture. So my dear students, let's quickly recap what we did in the previous lecture. For that, you have to answer a few questions. So here are the questions. Quickly tell me, what are some basic needs of life? You can pause the video and you can answer the question. Very good. Why do plants and animals need water? Very nice. Now tell me, describe some ways to use water at the domestic as well as industrial level. Very nice. So now you know that we need water at daily basis. We also use it at industrial level, at a bigger level. So water is an extremely important resource. So my dear students, now it's time for an activity. So my dear students, quickly look at all the pictures. These pictures tell you that we need water on daily basis for drinking, washing, cooking, cleaning, bathing, brushing our teeth, washing, and we need water for a lot of things. So my dear students, have you ever think that where does all the water come from? ये पानी कहाँ से आ जाता है? जो आपकी टैप्स में पानी आता है, ये कहाँ से आ जाता है? कोई मैजिक हो जाता है कि आप you just open the tap and the water starts flowing out? No, it's not like that. पानी जो है ये बारिश से और बर्फ बरसने से यानी कि स्नोफॉल से आपको ये पानी जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं ये मिलता है. जब भी whenever it rains or the snow falls on the mountains, so what happens? The water of rain, and when the snow melts, it goes down in underground, and from there springs बन जाती हैं बहुत सारे यानी कि चश्मे होते हैं, वहां से पानी बाहर निकलता है, and then a lake is formed. And then when the lakes combine, they form rivers and streams. And when all the rivers combine, they fall into the seas and oceans. So this is how water is being, these are the natural resources of water. ठीक है? आपकी जो water tank है, that is not a natural resource. ठीक है? आपने natural resource से पानी को पकड़ा और वो फिर आपके water tank में आपके घर के ऊपर आता है और वहां से taps में आता है, and then you use it. So snow and rain are the main sources of water on earth. बारिश और बर्फ की वजह से पानी जो है वो rivers, oceans, seas, springs and lakes, इनके अंदर जो है वो आपको पानी देखने को मिलता है और यहीं से हम इसको इस्तेमाल करते हैं. So my dear students, today all the students will be able to identify the natural sources of water around themselves. आपके इर्द गिर्द जितने भी natural sources है पानी के, आप उनको जो है वो identify करेंगे और आपको पता चलेगा कि हम इनको कैसे जो है वो इस्तेमाल करते हैं. So my dear students, the Islamic perspective. Once a companion of Prophet, peace be upon him, was performing ablution and using too much water. The Prophet said, "What is this extravagance?" The companion responded, "Is this extravagance with water and ablution?" The Prophet said, "Yes, even if you were on the banks of a flowing river." So अगर आप पानी बहुत ज़्यादा भी आपके पास है, still then you are not allowed to waste it, or you are not supposed to waste it. So my dear students, from here we will move forward towards the pre-reading question. Quickly think and answer, what are different uses of water? Drinking, cleaning, washing, bathing, generates electricity with the help of it. Plants need it. We need it for drinking. So a lot of uses of water on daily basis. Okay, my dear students, now quickly open page number 100 in your GK2 books.
I hope everybody has opened page number 100. First of all, you will have a look at the picture. So, when it snows and rains, the water comes into the springs, underground चला जाता है ये, और वहाँ से जो है पानी वो लेक्स की सूरत में लेक्स बनाता है, और लेक्स से पानी रिवर्स में आता है. And then river is a bigger thing. And then it flows down into seas and oceans. So these are the sources of water on earth. Main source क्या है? बर्फ और बारिश. और फिर ये जब इकट्ठा हो जाता है जमीन पर, जैसे कि स्प्रिंग्स में, लेक्स में, स्प्रिंग कहते हैं चश्मे को जो कि जमीन से फूटता है, springs में, lakes में, rivers में, streams में, oceans and seas, these are all resources because water is stored here. ठीक है, लेकिन main source क्या है पानी का? Water, rain and snow. Very nice. Okay, my dear students, now is the time for reading. Where does all the water come from? Water comes on earth in the form of rain and snow. Some of the rainwater collects in oceans, seas, and rivers. Some of it seeps into the soil. It gathers in empty rocks, spaces, and is called underground water. Snow falls on the mountains. It melts into water and makes springs. We use water from these resources to meet our needs. So my dear students, आपकी ज़मीन पर मेन सोर्स जो है, यानी कि जरिया जो है पानी का, वो क्या है? बारिश और बर्फ. जब बारिश होती है तो कुछ पानी जो है वो ओशंस में चला जाता है, कुछ रिवर्स में जाता है, कुछ लेक्स में, कुछ स्ट्रीम्स में, और ये पानी, कुछ पानी जो है वो नीचे अंडरग्राउंड कलेक्ट हो जाता है, और इसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड पानी, यानी कि ज़मीन के नीचे का पानी. और जब आप ज़मीन की खुदाई करते हैं तो वहाँ से अक्सर पानी निकल आता है. सो दीज आर ऑल द रिसोर्सेज ऑफ वाटर. ठीक है, सोर्स मतलब जरिया, और इकट्ठा हो जाना एक जगह पर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का, उसको हम रिसोर्स कहते हैं. सो रिवर्स, ओशन, स्ट्रीम्स, सीज, स्प्रिंग्स, दीज आर ऑल रिसोर्सेज. और जब बर्फ पहाड़ों पर पड़ती है, व्हेन इट स्नो फॉल्स ऑन द माउंटेन्स, दैट स्नो मेल्ट्स एंड मेल्ट्स डाउन एंड मेक स्प्रिंग्स, यानी कि चश्मे बनाती है वो, और वहां से चश्मों से जो है वो पानी लेक्स में आ जाता है, नदियों में आ जाता है, और दिस वाटर इज यूज्ड फॉर ऑन डेली बेसिस बाय एवरीवन. ठीक है, सो दिस वाज कि पानी जमीन पर कहाँ से आता है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में भी जो है बहुत सारे दरिया हैं. 5 दरियाएं हैं, इंडस, सतलुज, रावी, Chenab and Jhelum. These are all the 5 rivers of Pakistan. ठीक है, पाकिस्तान में बहुत सारे दरिया हैं, और ये दरिया जो हैं ये बहुत सारे पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. So my dear students, now is the time for practice. For practice we will do a project right now. ठीक है, और आज हम इस project का सिर्फ first part करेंगे. Draw main sources of water in your locality on a chart. Present your work in class. आपकी सोसाइटी में या आपके घर के आसपास पानी का जरिया क्या है? कहाँ से आप पानी हासिल करते हैं? Let me tell you, I will draw it first for you and then you will pause the video and you will make your work. So my dear students, here I have drawn a water tank. This is a water tank. See? So I draw it myself, और मेरी सोसाइटी में पानी जो है इस वाटर टैंक से आता है. So main source of water in my society is this water tank. और यहाँ से हर किसी के घर में जो है वो पानी आ जाता है. So for this you need a chart and you will paste it here like this. Main source of water in my society, this water tank. So my dear students, I hope now you will pause the video and everyone will make their where do they get water in their societies and in their locality. आप पानी कहाँ से हासिल करते हैं अपनी लोकेलिटी में?
आपको वो चीज जो है वो पेपर के ऊपर ड्रॉ करनी है. टीचर विल डिस्ट्रीब्यूट द पेपर्स एंड स्टूडेंट्स विल ड्रॉ एंड कलर इट एंड देन पेस्ट देम ऑन द चार्ट पेपर. एक चार्ट पेपर पे मेन सोर्स आप वो चार्ट पेपर के ऊपर जो है वो पेस्ट कीजिएगा. दिस इज योर प्रैक्टिस. पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट इट. I hope you have drawn it. This was the first part of the project. Next जो part है हम project का वो next lecture में करेंगे. So my dear students, now is the time for evaluation. For evaluation, I will ask some listening and speaking questions. So quickly tell me, what do you understand by natural sources of water? Natural sources meaning that where the water comes on earth is called natural source of water. For example, rain and snow. Where does water on earth come from? It comes from snow and rain. Very good. Okay, my dear students, now quickly note down your homework. On page number 101, home activity number 2 is given. Find out major water resources in Pakistan. Under each category, ocean, sea, river, lake, waterfall, collect one picture from each category and paste it in your scrapbook along with its name and location. So my dear students, मैंने आपको 5 जो है वो दरिया दिखाए थे और मैंने आपको कहा था कि ये पाकिस्तान में एक रिसोर्स है पानी का. So my dear students, अब आपको होमवर्क में क्या करना है कि आपको पाकिस्तान में ओशन, सी, रिवर, लेक, वाटरफॉल जो है इनकी पिक्चर्स कलेक्ट करनी है. कोई भी वन आप पिक्चर ईच कैटेगरी की पिक करें एंड देन पेस्ट इट इन योर स्क्रैप बुक. राइट डाउन इट्स नेम, where it is present, where it is located, also write it that. For example, I have done this for you. Here is Indus River. It is the biggest river in Pakistan. And then I have also taken a picture of a lake, Shangri-La Lake, which is located in Skardu Valley. And then there is a waterfall in Sawat. And finally, Arabian Sea, which is in Karachi, यानी कि जो दरिया समंदर है हमारा पाकिस्तान में, बहीरा अरब, Arabian Sea. So there are no oceans in Pakistan. So these are some pictures that I have collected. I have named them also. You will do it at your homes. Collect the pictures of different water resources in Pakistan. Only Pakistan के आप जो resources हैं उनकी pictures collect करेंगे. Also give them names. जो उनके names हैं, find them out and paste that in your scrapbook. This is how you will complete your homework. So what have we learned today, my dear students? Ocean, rivers, springs, ponds, waterfalls, and underground water are natural sources of water. Rain is the main source of water on earth. So my dear students, आज हमने सीखा कि ocean, seas, rivers, streams, lakes, springs, these are all natural resources of water. और ज़मीन के ऊपर ये जो sources हैं ये कहाँ से आ जाते हैं? इनके ocean, seas और rivers, इनका basic जरिया ये है कि जो आसमान से बारिश बरसती है, that is the main source of all these resources. इन तमाम resources को बनाने का main जरिया बर्फ और बारिश है. Okay? So I hope you have understood it. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.